guys, welcome back again to Lakshya Mangala Crafts, and please follow us on Instagram Lakshya9654 for any doubts and queries, and you can also suggest your suggestions in the comment box below. Thank you. मैं लक्ष्य मंगला फिर से हाजिर हूं एक क्राफ्ट ट्यूटोरियल के संग जो मार्केट में हमें गणपति जी के स्कल्पचर मिलते हैं उसकी डेकोरेशन बताएंगे इस बारी हम कि किस तरीके से कर सकते हैं। आप इसको गणपति आ रहा है तो उसके लिए भी यूज कर सकते हैं, गिफ्टिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं और दिवाली में गणपति पूजा के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो इसके मैंने 3 ऑप्शन बताया आपको, आपके ऊपर है कि किस तरीके से आपको यूज करना है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल बटन है इस तरफ, तो उसे जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे कि मेरी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी आपको। और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें वीडियो को। आइए देखते हैं इससे हम कैसे बनाएंगे। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब किया जल्दी से कर दीजिए प्लीज प्लीज प्लीज, इट्स माई रिक्वेस्ट टू यू। और अगर आपको कोई भी क्राफ्ट ट्यूटोरियल चाहिए जिसको आप बनाना चाहते हैं या फिर कुछ भी जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है आपको चाहिए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्या आपको मांग चाहिए और इस तरीके से मैं क्या बना सकता हूँ आपके लिए। नई नई वीडियोस में मैं अपना क्राफ्टी क्रिएशन डाल के मैं आपके लिए कुछ बनाने की कोशिश करूंगा कि आपको किस चीज चाहिए। तो अभी कमेंट करें और बाय बाय, देखते हैं कि किस तरीके से इस वीडियो में हम क्या क्या करने वाले हैं। What we have to do is take this type of Ganpati ji to decorate the for base and take some water like this and put some white fabric color, like I am having this white fabric color all over the statue of the Ganpati ji. Finally, after completing this white coat you have to color it according to the clothings as well as the skin. So but firstly I am having this skin color over here for putting upon this skin of Ganesha. This we have to did on this stomach part and this spoon and face as well as hands. We will leave this dhoti. Just let's see how to quickly. Now we have to highlight our tika and eyes with these red color and black and white. So take a 0 size brush to make this. You can also put some over here. Now we have to put these type of diamond chains over here with the help of fabric glue or any of the glue you are having. You can use that to decorate this. You have to cover all the ornaments, these ornaments and these piles, karas and bajubans and patterns all over the statue of Ganpati ji. Give it ornamentalized look. Put on some glue over here also to paste all the ornaments. Here too, these piles. We have made this design in 2 shades. First one is beige shade and another one is yellow shade of skin. You can make it in any color. तो गाइस देखा आपने कितना प्यारा तरीके से हमने इन गणपति जी को डेकोरेट कर लिया है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब किया जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में बता दें अगर आपको कोई भी तरीके की वीडियो चाहिए। मैं अगेन बोल रहा हूँ और थैंक यू फॉर वॉचिंग और थैंक यू फॉर ईच एंड एवरी सब्सक्रिप्शन। बाय बाय गाइस, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, सी यू।